Good evening, guys. Good evening, and welcome to Gradeup. I, Sarthak Sharma, welcome all of you, all the wonderful champions, to this equally wonderful platform that makes your learning easy, effective, efficient, and interesting. Good evening to and welcome to the part 4, the fourth sequel of the Legal Booster series, which aims to boost your preparation for legal aptitude, specifically in JMI Law Entrance Test and MH-CET Law Exam. The date of MH-CET is still not clear that on which date MH-CET is going to be conducted. But yes, JMI Law Entrance Test. How many days do you have still left? Just 17th of August को आपका एग्जाम है. Today is 4th of August already. So we will calculate then almost 13 days. In fact, only 12 days you still have for your preparation for JMI Law Entrance Test. I hope you all are fully loaded with your preparation and you are ready to shine. You are ready to outshine this examination. All right, I would just request our dear students to kindly affirm me that whether I am clearly audible as well as visible to you or not. Hi Aryan, hi Samara, hi Alok, hey Abhi. Good evening everyone. I hope मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, right? Shall I start with the session? And yes, just before starting the session, I was going through the live Olympic updates, and there is a good news for India. Yes, Ravi Kumar Dahiya in wrestling in 57 kg category. There are good chances कि हम लोगों को gold medal मिल सकता है. He had won the fight for the silver medals and now he is in the final. Finally, India has a chance to win a gold medal in wrestling. Ravi Kumar Dahiya, we are proud on our sports persons or players or athletes who are representing our nation. और वो इंडिया के तिरंगे को झुकने नहीं दे रहे हैं. Indian women's hockey team, they did extremely well. Unluckily, they lost to Argentina in the semi-finals, but they did well. They did well. Yes. Thank you, Ananya, for affirming that I am audible as well as visible. So let's start with this session. Before proceeding, guys, yes, there is a good news for all of you. On 4th of August, आज की तारीख बहुत ही ज्यादा लकी है हम लोगों के लिए. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भी और इंडिया के लिए भी. ऑब्वियसली रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल को जीतते हुए गोल्ड मेडल के लिए अपना कैंडिडेचर फिक्स कर दिया है. ही इज गोइंग टू फाइट इन द फाइनल फॉर द गोल्ड मेडल इन 57 kg wrestling category. And there is a CLAT 2022 repeaters course. It's a course for all those students जिन्होंने सोच ही लिया, जिन्होंने ठान लिया है कि क्लैट तो क्रैक करना ही है, नेशनल और यूनिवर्सिटी की सीट तो लेनी है. क्लैट 2021 नहीं तो 2022 से. यस, फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉपर्स बट हु आर नॉट स्टॉपर्स. वो ड्रॉपर्स तो हैं लेकिन वो रुके नहीं है, दे आर नॉट स्टॉपर्स. एंड रिमेंबर, इफ यू आर नॉट अ स्टॉपर, ऑल्दो यू आर ड्रॉपर, then you are going to be the next topper. To maximize your chances for cracking CLAT 2022, there is a CLAT 2022 repeaters course. The course highlights are that it would give you expert guidance by NLU alumni. You know, most of the teachers of Gradeup are NLU alumni. There would be a day-wise study plan. Each day counts, remember. So there would be a day-wise study plan so that you can score better. There would be weekly performance tests to test whether your improvement is up to the mark or not. And there would be faculty counseling and guidance sessions as well, जिसमें आप 1-to-1 sessions के थ्रू अपनी फैकल्टी से, अपने टीचर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू गूगल मीट, थ्रू जूम मीट और एनी अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म. Okay, Mahvish is asking, excuse me, sir, could you please tell me, has JMI BLLB admit card released? No, Mahvish, it had not been released yet. JMI BLLB admit card had not been released because I am thinking बिट इट इज नॉट अवेलेबल ऑन माई पोर्टल. डोंट वरी महवीश, आपके पोर्टल पे नहीं, किसी के भी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है. डोंट वरी, द जेएमआई लॉ एडमिट कार्ड हैड नॉट बीन रिलीज्ड येट, सो डोंट वरी गाइस. Moving forward, the CLAT 2022, a comprehensive course where you will prepare obviously with the NLU experts. This course has two batches. All for all those students who want that the medium of teaching should only be in English. There is an English medium batch. The launch date was 21st of July. And then there is a course which is high in demand. A lot of students were saying कि sir हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है. Then there is a bilingual course. The launch date was 25th of July. The course had just launched and enrollments have just started. You may enroll for this course and enhance your chances of cracking CLAT 2022, the coming CLAT. Moving forward. Yes, guys, why you should take this course if this question
Obviously, this question comes to your mind that why you should take the CLAT 2022 comprehensive preparation course. These 5 pointers are the answer. They are the highlights of this course. They are the benefit of this wonderful course. It's a course of 10 months duration. CLAT 2022 में 10 महीने ही बचे हैं approximately. Yes, you may count it. So this course would be there with you till the moment you will enter the examination hall. And along with this course, all the NLU alumni who are your teachers, they will be with you until the day of your exam. Till the last moment when you will enter your examination hall, we will be there with you to give you expert guidance, tips, and the last moment strategies to score better. Yes. Anu is asking, sir, JMI have moot court. Yes, Anu, JMI had a very wonderful moot court. The students of JMI have brought laurels to the institution, not only at national level but international moot courts as well. We have a very wonderful moot court room. You may visit the Faculty of Law in the campus of Jamia Millia Islamia. You can see that how wonderful the moot court is built there. Yes. Moving forward, dear sir, जब JMI admit card आ जाए तो declare. यस डियर सर, जब जेएमआई एडमिट कार्ड ही नहीं आया तो डिक्लेयर कैसे हो गया? अभिषेक, मुझे लगता है आपने ध्यान से जेएमआई का प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा. इन दैट प्रोस्पेक्टस ओनली द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन इज डिक्लेयर्ड. एडमिट कार्ड में डेट ऑफ द एग्जामिनेशन डिक्लेयर नहीं होती है. एडमिट कार्ड में आपका सेंटर डिक्लेयर होता है. द डेट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड ऑन 17th of August. जेएमआई लॉ एंट्रेंस होने वाला है. इट वाज डिक्लेयर्ड वे बैक इन द ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ऑफ जेएमआई. All right, Abhishek. So the admit card and its release has nothing to do with the date of the examination. Moving forward, yes, finally you have the first question on your screen. Hello Aman. Start करते हैं. Aim for a perfect 10 score, 10 on 10 is your aim. The questions would be easy. Let's see how many of you answered correctly. According to my strategy, you should first read the fact and then move to the principle. Easy question. Just focus on the principle, simply apply it on the fact and come to the conclusion. Kevin, the date of MH-CET had not been released yet. Applications अभी दोबारा से रीओपन हुए हैं. इन केस आई एम अगेन रिमाइंडिंग द स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने MH-CET के फॉर्म्स फिल नहीं किए हैं, लकीली MH-CET 2nd of August को दोबारा से रीओपन हुआ है. टिल 10th of August द फॉर्म्स आर स्टिल रीओपन. So if you want to fill the form for MH-CET examination, you may do it before 10th of August. The right answer is option A. Most of you are correct. Mahima or Creation, Mahvish, Sarita. Sarita B is not the right answer. A is the right answer, Mahvish. Let me explain you. Some students are saying B also as a correct answer, but most of you are correct because most of you are saying A. Simply in case where the principal is saying that in case where the government is a party, the government shall be the first owner of the copyright in the work unless there is an agreement to the contrary. जब तक कोई agreement ऐसा ना हो जो उसके against हो कि government first owner नहीं होगी, specifically अगर कोई agreement ऐसा नहीं कह रहा है, then government would be the first owner. The government of the state of X entered into an agreement with retired professor of botany. The professor agreed to write a textbook on botany. The government agreed to pay 10 lakh rupees to the professor for his work. So simply the government is the first owner. The government of state of X shall be the first owner of the copyright in the textbook. Simple application of principle on the facts gives the answer A. How can the professor be the first owner? There was no agreement to the contrary. यहां लिखा है कि जब तक स्पेसिफिक एग्रीमेंट ना हो जो कहे कि गवर्नमेंट वॉन्ट बी द फर्स्ट ओनर, गवर्नमेंट फर्स्ट ओनर नहीं होगी, तब तक ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट ही फर्स्ट ओनर होगी इफ इट इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, copyright contract. So the right answer was option A. Copyright is a type of intellectual property right, IPR. I have already taught you IPR. I have delivered special sessions on IPR. Moving to question number 2. क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगा. आई वॉन्ट टू सी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस मैगजीन इन द लाइव चैट्स. इट इज related to vicarious liability.
right? It is related to vicarious liability. Read the facts. I would be silent in the meanwhile. What shall be the right answer? It's an easy question. Qui facit per alium facit per se means he who does an act through another is deemed in law to do it himself. Right, right, Tanuj. He who does an act through another is deemed in law to do it himself. Simply, आप लोगों ने vicarious liability बहुत अच्छे से पढ़ी होगी in the courses of Gradeup. We have taught you it in detail. Vicarious liability, master servant relationship, employer employee relationship, agent principal relationship, इन सभी में follow होती है, in which one person is liable, jointly liable for the wrongful act of another person. So the right answer is option number C. You all are correct. Anu, Ravindra, Priyamvada, Prarth, Pratnimesh, Aslam, Ravindra. You all are right. 100% correct answers मिले हैं इस question के लिए. The right answer is C. Nisha is liable as Saurabh was driving under her authority and for her purpose. So there was a course of employment. It is a clear-cut case of vicarious liability in which the owner, Nisha, would be vicariously liable for the wrongful act of Saurabh that was working under her authority. The right answer is option number C. Let's move to the next question. Question 3. What does the legal maxim abundance cautelar non nonset means? देखिए, लीगल मैक्सिम्स एंड लीगल टर्म्स इतने सारे हैं कि आप क्या, मैं क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लीगल माइंड भी हर एक लीगल मैक्सिम का एक्चुअल मीनिंग नहीं रट सकता है, नहीं समझ सकता है. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग लीगल मैक्सिम्स. इवन इफ यू नो द वर्ड ऑफ even if you know the meaning of any of the four words, then you can come to the right answer. Yes, 1, 2, 3, 4. First of all, there are four words in the legal maxim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminate option D. Because अगर फोर वर्ड्स हैं मैक्सिम में तो उसके मीनिंग में भी फोर वर्ड्स ही होंगे. So eliminate option D. Eliminate option C as well on the same ground and eliminate option A as well on the same ground. Yes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Even if you do not know the right answer, you can come to the right answer through this trick. It is a trick simply. अगर इस ट्रिक को स्मार्टली देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का मारते हैं, वो गैस करते हैं. देखिए, गैस करने के भी दो तरीके हैं. वन इज अ वाइल्ड गैस एंड अनदर इज अ स्मार्ट गैस. वाइल्ड गैस की प्रोबेबिलिटी है 75% की वो रॉन्ग होगा, सिर्फ 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट होगा. व्हाई? बिकॉज आउट ऑफ द फोर ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. So there are chances, 25% chances that your option would be correct, your choice would be correct, and then there are 75% chances of an incorrect answer. तो wild guess नहीं करना है. Say no to wild guess. Say no to wild guess. अगर guess करना ही है तो smart guess कीजिए. What are smart guess? Now abundance का मतलब सबको पता है. Abundance means abundant. सिंपली abundant caution does no harm, जिसका मतलब है अगर आप जितना कॉशन रखना चाहिए उससे भी ज्यादा कॉशन रख रहे हैं, उससे भी ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है. एवरी पर्सन हैज अ ड्यूटी टू केयर. अगर वो ड्यूटी टू केयर बहुत ज्यादा भी उसने कर लिया, जितनी केयर एक रीजनेबल इंसान को रखनी चाहिए उससे भी ज्यादा केयर रख रहा है, तो कोई नुकसान तो नहीं है ना. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीगल मैक्सिम एंड दैट इज अ ट्रिक. इफ अ लीगल मैक्सिम हैज फोर वर्ड्स देन उसके एक्चुअल मीनिंग में भी फोर वर्ड्स ही होंगे. 1, 2, 3, 4. यस, ऑल राइट. Abundant caution does no harm. No harm is a single word. Yes, no set. No set means no harm. All right. Let's move to the next question. So, what shall be the cutoff of general? Tanuj, if you are asking about JMI law entrance test, I think that for this year the cutoff would be around 87 to 93. It is the cutoff for general category in JMI. So what is the difference between abduction and kidnapping? केविन, हालांकि मैं काफी बार बता चुका हूं, but still you solve this question. Till then I will write down the difference between kidnapping and abduction. केविन,
लिसन केयरफुली, किडनैपिंग स्टार्ट्स विद किड। किडनैपिंग हमेशा माइनर की होती है। अ माइनर इन केस ऑफ बॉय बिलो 16 एंड इन केस ऑफ गर्ल बिलो 18। किडनैपिंग स्टार्ट्स विद किड एंड एबडक्शन स्टार्ट्स विद ए फॉर एडल्ट। एडल्ट हमेशा, एबडक्शन हमेशा एडल्ट का होता है, एक मेजर का होता है। All right, it is the most basic difference. Baki, I have delivered a special class on this topic. You search in on YouTube and you will get the difference, the exact difference between kidnapping and abduction in detail. The question number 4, the right answer is option C, not A. Boni judicis lit dirime est means, boni means good. Bona fide, fide means intention. Bona means good. Judicis means judge. Lights means litigation. इतना ही काफी है. It is the duty of a good judge to prevent litigation. It is the duty of a good judge to prevent litigation. All right. It is the duty of a good judge to prevent litigation is the meaning of boni judicis lit dirime est. These are the root words. Boni का means तो सभी को पता होगा good. ऑल राइट, ऑप्शन नंबर डी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज वहां पर गुड वर्ड यूज नहीं हो रहा है. जुडिसियस का मतलब सबको पता होगा जज. यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर बी एज वेल, वहां पे जज वर्ड यूज नहीं हो रहा है. लिट्स मतलब लिटिगेशन, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि लिटिगेशन वर्ड ए में यूज नहीं हो रहा है. सो द राइट आंसर कैन बी ऑप्शन नंबर सी ओनली. इट इज द ड्यूटी ऑफ अ गुड जज टू प्रिवेंट लिटिगेशन. दैट्स वाई जजेस हमेशा कोशिश करते हैं कि ये केस मीडिएशन या किसी एडीआर के थ्रू सॉल्व हो. एडीआर मींस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. इवन द लॉन्गेस्ट फॉट लीगल बैटल ऑफ दिस नेशन, अयोध्या डिस्प्यूट केस, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल के पास भेजा था. जब वो फेल हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया. All right, that mediation panel in which Shri Ravishankar, senior advocate Shriram Panchu, and Justice FMI Kalipulla, retired justice of Supreme Court, ये तीनों थे. Yes, so it is the duty of a good judge to prevent litigation. Question number 5. Who among the following is in equal rank with the Speaker of Lok Sabha? Vice President, Cabinet Minister, Chief Justice of India or Judges of the Supreme Court? इन चारों में से किनकी इक्वल रैंक है एज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा? असलम, आप एएमयू की कट ऑफ पूछ रहे हैं. सी, एएमयू का एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का भी होता है और 150 मार्क्स का भी होता है इन डिफरेंट. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑप्शन नंबर सी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. असलम, द कट ऑफ ऑफ एएमयू is around, if the examination would be for 100 marks, then the cutoff would reach to 65 to 70, and if the examination would be of 150 marks, then the cutoff would be between 80 85 plus. Anyhow, it may be 90 plus as well. AMU में कट ऑफ हाई होती है बिकॉज एग्जामिनेशन थोड़ा इजी होता है. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. Question number 6. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. It's a legal maxim for negligence, tort of negligence. Read the facts and then come to the conclusion. What shall be the right answer? Obviously, the surgeon can be held responsible, so option A को हम eliminate कर सकते हैं. I am just trying to teach you the method of elimination. It is the best method to come to the right answer. The method of elimination. अगर आपको 100% क्लैरिटी के साथ कोई आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन का मेथड यूज कीजिए. इफ यू कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन और टू ऑप्शन देन डेफिनेटली आप गेस कीजिए राइट आंसर को. व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव एलिमिनेटेड टू ऑप्शन देन यू हैव जस्ट टू ऑप्शन लेफ्ट. द चांसेस ऑफ अ करेक्ट आंसर इज 50 एंड द चांसेस ऑफ द इनकरेक्ट आंसर इज ऑल्सो 50. इट इज 50-50 सिचुएशन. इनकरेक्ट आंसर में आपको 1/4 कम डिडक्ट होगा बट करेक्ट आंसर में आपको 4 गुना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे
For every correct answer, you will get 1 mark. For every incorrect answer, 1/4 would be deducted. So go with the guess. Do the guess if you can eliminate two options. The right answer for this question is C. Yes, you all are correct. Ravindra, Aslam, Nilofer, and Kevin, Mahima, Aslam. You all are correct. The right answer is option C. Surgeon will be responsible and Nirma need not to prove surgeon's negligence. Why Nirma need not to prove? Because the facts of the case are itself saying, the thing speaks for itself. यही तो प्रिंसिपल कह रहा है कि नेग्लिजेंस में प्रूव करने की जरूरत नहीं होती. नेग्लिजेंस में एक्ट में जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स अपने आप बता देते हैं. द फैक्ट्स आर सेल्फ एविडेंटली दैट नेग्लिजेंस वाज ऑन द पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट. So res ipsa loquitur, which means the thing speaks for itself. Here, the surgeon would be liable and Nirma need not to prove because the things are speaking for itself. The right answer is option C. Question number 7 is on your screen. General studies is a part of static GK and Abhimanyu sir and Rabia ma'am are taking a lot of sessions for it. Okay. Assertion and reason, and then assertion and reason questions भी JMI में आते हैं. What shall be the right answer? Sarita is saying A. Sarita, let's wait for some more answers. Aman is saying B. Both are individually correct according to Aman. Guys, the right answer for this question is A. Obviously, DPSP are in part 4. It is true. And DPSP are unenforceable, not enforceable by any court. It is also true. The principles therein laid down are nevertheless fundamental to the governance of the country. It is also true. ये तो खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था. And it shall be duty of the state to apply these principles in making laws. Directive principles of state policy means वो principles जो state की मतलब सरकार की जो policies बनेंगी उन policies को direct करेंगे. Obviously, DPSP को हम non justiciable rights of citizens भी कह सकते हैं. DPSP are non-justiciable rights of the citizen. Justiciable means judicially enforceable. So non-justiciable means the rights that cannot be enforced in a court of law. And fundamental rights, on the other hand, are justiciable rights that can be enforced in a court of law by virtue of Article 32. Right? So जब ये दोनों एक्चुअली एक ही पार्ट बनने थे बट इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था, तो देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कि हम जो राइट्स ऑफ सिटीजन है उनको दो पार्ट्स में बांट रहे हैं. वन इज नॉन जस्टिशिएबल राइट एंड अनदर इज जस्टिशिएबल राइट. सो जब एक क्वेश्चन उठा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने कि जस्टिशिएबल राइट्स को तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एनफोर्स करा देंगी बट नॉन जस्टिशिएबल राइट्स को तो गवर्नमेंट फॉलो करेगी नहीं, अगर नहीं करेगी गवर्नमेंट फॉलो तो उनके ऊपर कोई केस तो हो नहीं सकता है. देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के लिए अ पर्सन कैन फाइल अ रिट इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. बट अगर सरकार डीपीएसपीज मतलब नॉन जस्टिशिएबल राइट्स को फुलफिल नहीं करती है तो वो जनता की अदालत में उनका फैसला होगा. इन द नेक्स्ट इलेक्शन द पीपल विल ओवरथ्रो देम. सो ये जो डीपीएसपीज है नॉन जस्टिशिएबल राइट नॉन एनफोर्सेबल जरूर है बट अगर सरकार इनको फॉलो नहीं करती है तो गुड गवर्नेंस नहीं होगी, और अगर गुड गवर्नेंस नहीं होगी देन द पीपल वुड नॉट वोट फॉर देम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ए इज डेफिनेटली ट्रू. And option B, DPSP and fundamental rights are both complementary. Why? Because both are rights of citizens. DPSP are also rights of citizens. Fundamental rights are also rights of citizens. Okay, but in case of any controversy, fundamental rights will prevail. Obviously, they will prevail. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. R is the correct explanation of A here. So option A is correct. Remember, there are 5 types of rights: civil, political, and cultural rights, and then there are social economic rights. So civil and political rights are in fundamental rights part 3, and social economic and cultural rights, most of the social economic and cultural rights are in DPSP part 4. Reason is correct explanation. Aman, read it again. Assertion सिर्फ डीपीएसपी के बारे में बता रहा है और जो रीजन है वो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन बता रहा है, दैट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. Yes. So the reason is an explanation of DPSP. Reason is also
Reason is also pointing out the importance of DPSP as rights of citizen, and assertion is also pointing out the importance of DPSP. Then coming to question number 8, any person can be sued for tort in India except which of the following? A foreign sovereign, an infant, a state or public officials. Tort के लिए who all can be sued? विकास, मैं आंसर ऑलरेडी कर चुका हूं कि जेएमआई कट ऑफ कितना रहता है. यस. Question 8. Alright, Safa is saying B. Let's wait for some more answers, Safa, then I will reveal the right answer. All are correct. The right answer is B. You all are correct. The right answer is B. Remember, in criminal case, in a criminal matter, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन होता है, और प्रोसिक्यूशन ना एक फॉरेन सॉवरेन का हो सकता है, ना ही एक इन्फेंट का हो सकता है, ना ही स्टेट को प्रोसिक्यूट किया जाता है. स्टेट इज ऑलवेज द प्रोसिक्यूशन एंड स्टेट कैन नेवर बी द एक्यूज्ड. अ फॉरेन सॉवरेन कैन नॉट बी द एक्यूज्ड. इन्फेंट कैन नॉट बी एन एक्यूज्ड. State can never be accused. Public official can be an accused. Yes. But coming to civil cases, in civil cases like torts, foreign sovereign can be a party, state can be a party, state can be defendant, foreign sovereign can be defendant, public officials can also be defendant. An infant can't be a defendant. Got it? I hope you got the difference between criminal matters and civil matters. सिविल मैटर्स दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच भी हो सकते हैं, एक प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट के बीच भी हो सकते हैं, इन विच स्टेट कैन बी द प्लेंटिफ एज वेल एज द डिफेंडेंट. बट इन क्रिमिनल केसेस स्टेट इज ऑलवेज द प्रोसिक्यूशन एंड स्टेट कैन नेवर बी द एक्यूज्ड. रिमेंबर, स्टेट क्राइम नहीं कर सकती और हमेशा क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट स्टेट ही करेगी क्रिमिनल केसेस में. इन सिविल केसेस लाइक टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट डिफेंडेंट भी हो सकती है, मतलब स्टेट को स्यू भी किया जा सकता है, एंड स्टेट प्लेंटिफ भी हो सकती है, और हो सकता है स्टेट दोनों ही ना हो. Question number 9. The difference between an advertisement for sale and a proposal. What is the difference between an advertisement for sale and a proposal? Remember, someone advertises in a newspaper कि मुझे अपनी property 50 lakh rupees में sell करनी है. Is it a proposal or an offer? Under section 2A. Let's wait for the right answer. Then I will reveal. Let's wait for some students to answer. उत्तम, मैं बात बता चुका हूं कि JMI एडमिट कार्ड फॉर लॉ हैड नॉट बीन रिलीज टिल नाउ. अभी तक रिलीज नहीं हुए. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, that a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it is made accepts it, but an advertisement does not. Yes, an advertisement for sale is not an offer or proposal. It is an invitation to offer. It is an invitation to offer. There is a difference between an offer and invitation to offer. शॉप में एक कपड़े एक कोई क्लोथ है जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है. मैं वो प्राइस टैग देखता हूँ 500 रुपीज का, और मैं शॉपकीपर को जाके ऑफर करता हूँ कि आई वांट टू परचेज दिस क्लोथ फॉर 500 रुपीज. नाउ जो शॉपकीपर ने वो प्राइस टैग लगाया, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर. और जैसे ही मैं कहता हूँ आई वांट टू परचेज, आई गिव्स द ऑफर टू हिम. ऑफर एंड प्रपोजल आर सेम थिंग. प्रपोजल को ही हम ऑफर भी कहते हैं. एंड इफ द शॉपकीपर एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, then there is acceptance, obviously. So that advertisement is not a proposal or a offer, it is an invitation to proposal or invitation to offer. अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज कर देता हूँ that I want to sell my mobile phone for 15,000 रुपीज, या OLX पे जैसे मैंने ऐड डाल दिया, OLX पे मैंने एडवर्टीजमेंट डाल दिया, तो आपने देखा होगा सामने वाली पार्टी ऑफर करती है. there is on OLX app there is an option for giving an offer to the person. So always remember, advertisements are invitation to offer. Means that person is inviting us to give them an offer. They are not offering it. So option B was correct. I hope it is clear. And question number 10. Safa, Islamic jurisprudence के ऊपर I have taken a lot of session in the JMI batch of Gradeup. मैं JMI के
बैच के अंदर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर सेशंस ले चुका हूं. आई होप इट इज एक्सेसिबल टू यू. सिग्निफाइंग विलिंगनेस बाय ए टू बी, मतलब एक इंसान जब दूसरे इंसान को विलिंगनेस करता है टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन दैट पर्सन्स एसेंट. एसेंट मींस एक्सेप्टेंस. देन इट इज कॉल्ड, simply this thing is defined in section 2A of Indian Contract Act 1872. Okay, it is simply a proposal. Yes, you are right, it is simply a proposal. A proposal is signifying your willingness to an another person to abstain from doing something, कि आप कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा जो आप चाहते हो, या फिर जो आप चाहते हो वो करूंगा, in order to obtain the assent or acceptance of that person. मैं ऑफर देता हूं, that person accepts, then it becomes, remember it's a chronological order. Every contract starts with a offer. Offer is also known as proposal. When a proposal is accepted, it becomes a proposal. जब accept होता है तो बन जाता है promise. When the promise comes with consideration, consideration can be in cash or kind, but होना जरूरी है, then it becomes an agreement. And when that agreement has a lawful object, legal object होता है, तब वो agreement बनता है contract. Sorry for the bad handwriting, but we can say that what is a contract? A contract is an offer that is accepted with consideration and with a lawful object. Contract is an offer, an accepted offer that comes with a consideration and with a lawful object. All right. So contract in the utmost sense is an offer. So with this, we come to the end of this session. I hope you all have scored well in this class, and this class was worth watching, in which you learned something. Guys, before ending, I would just like to notify all of you that there is a CLAT 2023 foundation course. Enrollments have just started for this course. There is no backlog of syllabus right now. It's a 2-year program for CLAT 2023. You have exactly 1 year and 10 months for the CLAT that would succeed the coming CLAT 2023. Start your preparation now. It's the right time, and it's a high time to start your preparation. The expert faculties of Gradeup, meet them. They themselves are national or universities alumni. The only way to get the benefit of their experience and their high intellect is to subscribe to the super courses of Gradeup Super. So subscribe now. I can see students notifying me their scores 9 out of 10, 8 out of 10, 7 out of 10. And Alicia, you have a 10 out of 10, a perfect score. Well done, Kevin, Safa. You all did well. Great, Mahima. Hi, hey, Ananya. Great. 9 out of 10 is a good score. So you all did well. Always remember, मैं अपने हर सेशन के एंड में यही कहता हूँ, यू नीड टू इम्प्रूव. रोज जाग कर बस ये देखना है कि कल से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. If there had been an improvement, then you are on the right track. If there is a deprovement, then you need to change the track. With this, let's end the session, guys. Sahi prep है, तो live set है. Bye bye. Meet you soon in another session very soon.